Dear students, already we have started the chapter. We have taken first concept, that is a distance formula. We will take some question, but before to that, I will take one example here for understanding purpose here. Suppose any point is there whose coordinates are a, 4, 0. Point is there whose coordinates are 4, 0. We have to locate this point. We have to locate this point a 4, 0 in graph. So to locate the point in a graph, here we know very well that for this point a having two coordinates, one is a 4 and one is a 0. 4 is which coordinate? It is a x coordinate, whereas 0 is which coordinate? It is a y coordinate. So here to locate, for plotting this point in the graph, we have already know that this is the x-axis, this is the y-axis, and this is a origin. So here if we take the values on positive x-axis, then that we get 1, 2, 3, 4. On y-axis also we will take 1, 2, 3, 4. On negative y-axis -1, -2, -3, and so on. Here also -1, -2, -3, and so on. Now here if I have to plot this point a 4, 0, where this point lies, so for this point x coordinate is 4 and y coordinate is 0, therefore this point lies at particular place, at this particular place. So we can see here coordinates of a are there, and that is 4, 0. Similarly, suppose I have to plot the second point b whose coordinates are 0, 3. Now for point b, what are the coordinates? x coordinate क्या है इसका? 0 है, whereas y coordinates क्या है? तो 3 है. So where this point we have to locate? So this point we can locate at this particular place. Why? Because x coordinate 0 है but y coordinate 3 है, and that's why we can say point b lies here. Point a lies here, whereas point b lies here, whose coordinates are x coordinate 0 and y coordinate is a 3. So from these 2 points, what we can conclude? We can conclude that if point lies on x axis, अगर point x axis पे आता है तो उसका y coordinate क्या है? 0 है. Why? Because if the point is there on x axis, then no relation is there with y axis for that particular point. Means उस point का y axis से कुछ भी relation नहीं है, तो उसका y coordinate 0 रहेगा. Similarly, if the point lies on the y axis, then for that point y value is there and x value is 0. It means for that point b, no relation is there with x axis. X axis का उसका coordinate 0 रहेगा. So similarly, suppose I will take some examples. General, I will take C. Coordinates are 6, 0. So on which axis this point lies? So इसमें अगर देखा जाए तो इसकी x वैल्यू है, y वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब वो 0 है. So डेफिनेटली पॉइंट x एक्सिस पे आएगा. अगर मैं पॉइंट लेता हूँ D, पॉइंट D कोऑर्डिनेट्स आर 0, -5. 0, -5. सो इसकी कौन सी वैल्यू है? तो इसकी y वैल्यू है, x वैल्यू तो है ही नहीं, वो तो 0 है. देयरफॉर ये जो पॉइंट ये कहाँ पे आएगा? y एक्सिस पे, बट कहाँ पे? नेगेटिव y एक्सिस पे, लाइक दिस. सो फ्रॉम दिस ऑल वैल्यूज व्हाट वी कैन कंक्लूड is, suppose any point is there which lies, suppose point E is there which lies on x-axis, suppose point E is there which lies on x-axis, but we don't know the coordinate for that point. Point E is there, that point E lies on which axis? x-axis. अगर point E x-axis पे है तो उसके coordinate अगर हमें find करने हैं, उसके coordinate क्या लिखेंगे हम generally? It means we don't know the coordinates of point E. So what we can say, अगर पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है तो डेफिनेटली उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा? y उसका 0 रहेगा. तो x क्या है? x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, दैट्स व्हाई आई विल टेक हियर वैल्यू ऑफ इट एज x. सो पॉइंट E, if it is lies on x axis, then coordinates are x, 0. If point F lies on y axis, then for this point F, if point F lies on y axis, then what are the coordinate for point F? F के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? पॉइंट कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे. कौन सा 0 रहेगा? x 0 रहेगा. y क्या रहेगा? सो y कोऑर्डिनेट इज लाइक दिस 0, y. सो दिस वी कैन से जनरल वैल्यूज. If the point lies on x axis, then coordinates always x, 0. If point on y axis, always coordinates 0, y. So this you have to write in a note. You have to write
that if point lies on x-axis, then its coordinates are x, 0, and if lies on which axis? Y-axis, then its coordinates are what? 0, y. So write down this point in note. Now I will take one question based on this concept. And that question is find the value of y. Find value of y for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y is 10 units. Question I'm repeating again. Find value of y. What we have to find out? Y value we have to find out, for which the distance between the points P, these coordinates, and Q, these coordinates, is 10 units. So it means definitely we can say, in solution I will write here. So distance is given as 10 units in which points? Between point P and Q. So for example, for understanding purpose, I will draw one line segment here. That is this is a point P, coordinates 2, -3, point Q, coordinates 10, y. So point P and Q, now this distance is given as how much? 10 unit. How much? 10 unit. Therefore I will write, distance PQ is equal to 10 unit. Distance PQ equal to 10 unit. This is a given. Distance PQ equal to 10 unit. But now we will find distance PQ. Now I will write for PQ I will write PQ coordinate क्या है? तो वो है 2, -3. So this we can okay. And for PQ and Q, coordinates of PQ are 10 and y. So we can say these coordinates are x1, y1, x2, y2. So it means simply using which formula? Distance formula. So coordinates of P are 2, -3, x1, y1, and Q 10y, x2, y2. Therefore we can say, using which formula? Distance formula. Therefore using डिस्टेंस फार्मूला. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टेंस PQ का पता है 10 मिनट से, वैल्यू में पता है, बट नाउ आई विल फाइंड आउट यूजिंग फार्मूला. सो फार्मूला के हिसाब से क्या आएगा? सो आई विल राइट डिस्टेंस फार्मूला. व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? इफ यू रिमेंबर, देन डिस्टेंस फार्मूला इज in bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. So therefore I will write distance PQ is equal to under root. What is x2 here? x2 is what? 10. What is x1? 2. So we can say 10 minus 2. What we can say? 10 minus 2. So I will write here 10 minus 2 and bracket square plus sign.
सो प्लस नाउ y2 माइनस y1, व्हाट इज y2? y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y है, और x2 की सॉरी y1 की वैल्यू क्या है? -3. सो आई विल राइट हियर y2 की वैल्यू y, दिस माइनस n फ्रॉम द फार्मूला, एंड दिस y1 की वैल्यू भी माइनस है. सी हियर दिस इज ऑल्सो माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस. So I can write directly plus also, but in first step write it as it is for avoiding the confusion. तो मैंने क्या किया, ये y माइनस एन एज इट इज लिखिए मैंने. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ y1 दैट इज -3 ब्रैकेट स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट द अकॉर्डिंग टू फार्मूला दैट इज 10 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 ब्रैकेट स्क्वायर. सो दैट गिव्स अंडर रूट 10 - 2 8 square plus y. First I will solve the bracket y minus and minus y plus 3 bracket square. But now this distance PQ we know very well. ये हमें पता है distance कितना है. So 10. So that I will write here. This distance PQ is given as 10. This is given. We no need to find the distance here. We have to find out the value of this y. हमें इस y को find करना है. And that's why I have taken the distance as a 10 unit here. So now what I will do, I will solve in one more step, that is under root. In under root here 8 square, it means what? 64 plus this also, this we can solve but no need to solve here. Why? Because we have to find out the value of y. So I will write like y plus 3 bracket square. Now I will take squaring on both sides. So if we take squaring on both sides, what will happen? From the right hand side this square root directly will get removed, and here on the left hand side we have to make square of this 10. So here I will write why we have to find out why, because we have to find out the value of y here. हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना है. So therefore I will write on squaring what we get? 10 square, left hand side 10 square, and on right hand side I can write under root 64 plus y plus 3 bracket square और इसका भी square. So what happened on the right hand side? This square and this square root get cancel. Square और square root cancel हो जाएगा. So we will get here on the left hand side 10 square 100. 10 का square 100 is equal to what we will get on the right hand side? 64 plus y plus 3 and bracket square. ये square अंदर का square है. Already we have cancelled this square with square root. So here if we take 64 to the left hand side, what we get? 100 minus 64 is equal to on the right hand side y plus 3 bracket square. So what we get? 100 minus 64, that is we will get here 36 is equal to y plus 3 bracket square. Y plus 3 bracket square. So I will solve here only for understanding and avoiding the confusion. So what we get? Again now we have to remove this square. Here we have to remove this square. So what I will do? Just like here, for example मैं यहाँ पे ले रहा हूँ समझने के लिए. For example, if y square is equal to 9, if y square is equal to 9 and we have to find out the value of y, what we get? What we have to take? We have to take the square root of both side. तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो y इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 3 मिलेगा. y इक्वल टू क्या मिलेगा? 3. एक्चुअली विल नॉट गेट द y इक्वल टू 3. हमें y इक्वल टू 3 नहीं मिलेगा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू नोट. अगर y स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू हमें 3 मिलती है, बट एक्चुअली वो 3 है क्या? नो. वाई? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने देखा था कि ये जो स्क्वायर है लास्ट ईयर ऑल्सो, एंड दैट सेज if power 2 is there, that means having 2 zeros. इसके 2 zeros रहते हैं, बट यहाँ पे तो हम 2 zeros इसके फाइंड नहीं कर सकते. दैट्स वाई जब y स्क्वायर इक्वल टू 9 है, सो उसका आंसर जो आएगा दैट y इक्वल टू 3, तो वो 3 नहीं आएगा. वो क्या आएगा? y इक्वल टू प्लस माइनस 3. y इक्वल टू प्लस माइनस 3. सिमिलरली इफ y स्क्वायर इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? वैल्यू ऑफ y इक्वल टू प्लस माइनस 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? प्लस माइनस 2. y बिकॉज हियर डिग्री 2 इज देयर. डिग्री 2 है तो उसके 2 वैल्यूज रहते हैं, बट यहाँ पे तो 2 हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 2. सिमिलरली हियर ऑल्सो आई विल राइट इफ ऑन द राइट हैंड साइड 36, लेफ्ट हैंड साइड 36 is there. So on taking square root, what we get here, that is on the left hand side we will get plus minus 6 is equal to y plus 3.
क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लिया, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लिया, राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट आ गया y+3, जस्ट लाइक हियर y स्क्वायर 9 है तो यहाँ पे y आ गया, सिमिलरली y+3 ब्रैकेट स्क्वायर है तो सिर्फ y+3 आ गया, हियर +-6. So what I will do, I will take one plus, one time plus and one time minus. So I will write here these 3 I will take toward left hand side. So अगर ये 3 को left hand side में मैं लेके आता हूँ, so what we get here, so I will, for solving purpose what I will do, I will write here y plus 3 is equal to +-6, y plus 3 equal to +-6. So here we will get, if this 3 will take on the right hand side, तो 3 तो left hand side में प्लस ही है, 3 तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, अगर उसको हम राइट हैंड साइड में लेते हैं तो क्या होगा, वो माइनस होगा. सो दैट विल गेट y इक्वल टू +6 - 3, y इक्वल टू +6 - 3, सो दैट विल गेट y इक्वल टू +3. दिस इज वन वैल्यू, दिस इज वन वैल्यू फॉर, दिस इज फॉर +6. ये जो वैल्यू मैंने सॉल्व की है +6 के लिए. नाउ आई विल सॉल्व फॉर सेकंड. So also what I will write, y equal to -6 and -3. 3 तो माइनस ही रहेगा, y 3 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, that is a -3. But here we have to solve for 2 times, for one time for +6 and second time for -6. So that will get -6 - 3, that is equal to -9. Y equal to -9. So we will get the 2 values of y. We will get 2 values of y. One is a, that is a +3. And one is a -9, like this. So this is a one question that I have solved. Now I will solve second question based on the same concept or same type of concept. So I will take that question. Question is here. Find the point. Find point on x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9. That is a 2 - 5 and -2 9. Find the point on x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9. मतलब, so here I will take find the point. क्या find करना है? Point find करना है. On which axis? On x-axis. Point lies on which axis? X-axis. Therefore I will write, therefore in answer I will write let point A. Which point I have taken? A. अभी ये A पॉइंट कौन सी एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे. ऑलरेडी आई टोल्ड इफ द पॉइंट इज लाइज ऑन द x एक्सिस देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A. अगर पॉइंट A x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स आर x, 0. Why? Because we don't know the coordinates of point A. Okay, so let point A x, 0 be equidistant from points. A पॉइंट इक्विडिस्टेंट कौन सी पॉइंट से, तो पॉइंट B लिया मैंने, दिस पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B. क्या है कोऑर्डिनेट्स? 2, -5 एंड मैंने इसको नाम दिया C, -2 and 9. मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से मैंने लिया फाइंड द पॉइंट, सो आई हैव टेकन दैट पॉइंट A. कौन सा पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है? वो पॉइंट है पॉइंट A. कौन से 2 पॉइंट से? तो वो पॉइंट B और पॉइंट C से इक्विडिस्टेंट पे है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ वन डायग्राम. मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ समझने के लिए. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे A पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या लिए मैंने, x, 0. तो ये जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, A के पॉइंट B, उस कोऑर्डिनेट्स आर 2 - 5 and one another point is there which is a point C, whose coordinates are -2, 9. So now A point is there at equidistant from B also and C also. So here we can say whatever distance AB is there, same distance AC is also there. A का distance B से जितना है उतना ही distance C से भी है, and therefore we can say
distance AB is equal to distance AC, डिस्टेंस AC. सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर AB. AB के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम A के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 0. B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -5. सो हियर आई विल गिव योर नेम एज x1 y1 x2 y2. मैंने क्या किया, AB का डिस्टेंस फाइंड करने जा रहा हूँ मैं. सो आई विल राइट डिस्टेंस AB is equal to under root in bracket x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So that gives under root x2. What is the value of x2? 2 minus x. क्या मिलेगा यहाँ पे, x2 minus x1 2 minus x square plus what is y2? -5 -0. So -5 -0 ब्रैकेट का स्क्वायर. सो हियर नाउ इसको मैं सॉल्व नहीं करता, इसको मैं ओके वन स्टेप आई विल सॉल्व हियर, वन मोर स्टेप इज पॉसिबल. सो आई विल राइट 2 minus x 2 minus x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 plus 0 -0 is equal to -5 square. That gives under root 2 minus x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर plus 25 -5 का स्क्वायर plus 25. So this is nothing but distance AB. This is nothing but distance AB we have finded. So now I will write for AC. Why? Because we have to find out now this AB already we have find out. Now we will find out AC. Now for AC I will write coordinates of A are x, 0 and coordinates of C are, what are the coordinates of C? -2, 9. -2, 9. So again this will be x1 y1, this will be x2 y2. Therefore distance AC is equal to under root in bracket x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 square. So that is under root what is x2 here? -2 minus x, -2 minus x. So I will write here -2 minus x bracket square plus what is y2 here now? 9 minus 0. So that is a 9 minus 0 bracket square. So that it gives under root -2 minus x bracket square, -2 minus x bracket square plus 9 square. That it gives under root -2 minus x bracket square plus 9 square 81. 9 square 81. So now here we can say distance AB we have finded here, distance AC we have finded here, but we know very well that distance AB is equal to distance AC. So we can say this 1 and this 2 we can equate directly. Why? Because distance AB का ये आंसर है, distance AC का ये आंसर है. So हम इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं. Why? That is given already. So I will write here. So I will write here as distance AB is equal to distance AC. Distance AB is equal to distance C. So what is distance AB? That is a under root in bracket 2 minus x bracket square under root 2 minus x bracket square plus 25 is equal to, on the right hand side, AC, distance AC. What is the distance AC? -2 minus x bracket square plus 81. As the square root is there on the both hand side, directly we can remove the square root. Why? Because I will write on squaring. On squaring, it means taking square on both side. What we get? On the left hand side we will get here 2 minus x bracket square plus 25 is equal to, on the right hand side we will get -2
minus x bracket square plus 81. So here now I will take the square on this side, that is using identity a minus b bracket square. Using identity a minus b bracket square, that will get 2 square 4 minus 2 to the 4x plus x square plus 25 is equal to, here we will get minus 2 square 4 minus sign minus, but here minus and this minus also there, that's why we will get here plus. आइडेंटिटी तो a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर ही है, बट इसका आंसर प्लस में आएगा. वाई? बिकॉज हियर ऑल्सो दिस नंबर इज अ माइनस, दैट्स वाई विल गेट हियर प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81. So here now, okay, 1 minute. Here minus 2 square. We are using here identity a minus b bracket square. So here a square minus 2 square 4. So here minus 2ab. So here that is a plus 4x plus x square plus 81. Okay. So now what we will do here? Here we can say this plus x square get cancelled. Here also on the left hand side plus 4 is there. Here also plus 4 is there. So that also get cancelled. Now this minus 4x and this plus 4x is there, so it is not possible to cancel this. I will take this 81 towards left hand side, so that will get 25 minus 81 is equal to this 4x and this 4x again will take towards right hand side, so we will get plus 4x. So we will get here 4x plus 4x will get here 8x, and 25 minus 81 will get here that is a 6. If we subtract, then we will get here 6, and here we will get here 56. Here we will get 56 if we subtract 25 from 81. So now here, to find the value of x, what we get? We will divide this 56 with 8. So we will get 8x equal to 56 by 8. So that gives x equal to 8 1s are 8 7s are 8 1s are and 8 7s are, so we will get x equal to 7. We will get x equal to 7. So this x equal to 7, but what we have to find out? We have to find out the value of, sorry, here, okay, 1 minute. Here 25 minus 81, here sign of this will be minus 56. Why? Because larger number is a 81 whose sign is a minus, that's why minus 56. So it means here minus 56, and here we will get the value of x equal to minus 7. Okay, here x value is equal to minus 7, and therefore the coordinates of a के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे? x, 0, and therefore a के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? -7, 0. So this is that point. Like this, try to solve the remaining question from first exercise. Those questions that you are not able to solve, try that questions. Even if you are not getting the answer, I will solve that questions.